So good morning students. Today we will start the chapter number 11, If I Were You, from our book Beehive. So let's start with the introduction part of this chapter. This chapter is written by Douglas James. It is a one-act play which has been humorously presented. The play has some spectacular stage settings and tone variations. The characters have been delineated in a witty and ironic manner. Douglas James has made a hilarious presentation of a very funny and unexpected situation. The main character is Gerard, who lives alone in a lonely cottage. An intruder who is a criminal enters his cottage. He intends to murder Gerard and takes on his identity. Now we will discuss about the summary part of this chapter in English. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a lounge suit and a grey coat. His voice is cultured. He is telling that in 10 minutes he would be there. He puts down the phone and goes to the divan on the left, where there is a travelling bag, and starts packing. Suddenly, an intruder breaks into his lonely Essex cottage. While Gerard was busy with his packing, another man, similar in build to Gerard, enters from the right silently. A revolver in his hand, he is flashily dressed in an overcoat and soft hat. He bumps accidentally against the table. At the sound, Gerard turns quickly and sees a man with a revolver. He exhibits pleasing attitude. He tries to be calm and nonchalant. The intruder warns him to stop being smart. The intruder who would make him crawl. Then the intruder asked, "You live here alone?" Gerard said. "Are you telling me this or asking me? Because it is a question of inflection." Then the intruder asked, What are your Christians' names?" He replied that these are Vincent Charles. Next the intruder asked, "Do you run a car?" He replied in the negative. The intruder pointed out that was a lie. He knew that he owned a car. Even then Gerard tried to divert his attention by asking if he was an American or that was merely a clever imitation. But when the intruder reminded him about his revolver, Gerard admitted that it was in the garage. Further, the intruder asked, "Do people often come out there?" Gerard replied that surprisingly few people took the trouble to visit him, such as the baker, the greengrocer, and the milkman, but none was so interested as the intruder. Then the intruder pointed out that he knew that Gerard never saw tradespeople. Gerard said that he seemed to have taken a considerable amount of trouble because he knew too much about Gerard. Then Gerard asked the intruder to tell something about him. Gerard's questions. The intruder harsh replies when Gerard asked the intruder to tell something about him. He pointed out that he had got brains and he used them. That's why he was there where he wanted. Gerard sarcastically pointed out that it didn't require a great brain to break into his little cottage. The intruder threateningly pointed out that the Gerard would feel fright when he knew the reason of his arrival there. Gerard further asked if he had any specialty in crime. The intruder replied that it was a jewel robbery. Gerard said that jewels were few and far there. The intruder said that so were the cops. He would retire there for a while. Gerard said that he wasn't invited there. The intruder said sarcastically that Gerard wouldn't live there long. He was going to kill him. Gerard said that it was harsh. He should not add murder to other crimes. The intruder informed that he was wanted for murder already, so one more murder would leave no impact. Gerard asked what he would gain. The intruder replied he would gain freedom. Then the intruder said that he would live as VC Gerard. Gerard said that he wasn't particularly decorative. The intruder pointed out that he would wear his specs and clothes.
He revealed that he killed a cop, so the police were behind him. He was in Aylesbury where he saw Gerard, who was similar in build. He looked like a mystery man, gave orders on phone, went away suddenly and came back just the same. Then the intruder prepares to shoot him. Gerard framed a story that police were behind him. It's better for both of them to go away in car. His bag is ready. There are items of disguise in it. He received a phone call. He tells the intruder about the arrival of the police. The intruder tries to confirm it. But when the intruder leaned forward to inspect, Gerard gives him a push into the cupboard, knocks the revolver out of his hand, slams the door and locks it. Then he makes a call to one of his men to send his friend Sergeant from the public bar to arrest the intruder. Then the curtains falls here. तो ये जो कहानी है या नाटक है, इसका मुख्य जो पात्र है वो है जेरेड। ये एक नाटक है। जब इसका पर्दा उठता है तो हम पाते हैं कि जेरेड मेज़ के पास खड़ा हुआ फ़ोन पर बात कर रहा था। वह एक मध्यम कद का और उसके सींग में फ्रेम वाला चश्मा उसने पहना हुआ है। उसने एक लाउंज कोट तथा बड़ा सा कोट पहना हुआ है। एक बोलचाल उसकी बहुत ही अच्छी सभ्यता वाली भाषा है। वह कह रहा है कि 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा और फ़ोन रख देता है। बाईं तरफ दीवान तक जाता है। वहाँ एक यात्रा बैग रखा जाता है जिसमें सामान रखने लगता है। जब जेरेड अपनी पैकिंग में व्यस्त था तो एक अन्य व्यक्ति जो शारीरिक रूप से जेरेड के जैसे था चुपके से दाहिनी तरफ से प्रवेश करता है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है। उसने एक चमकीला ओवरकोट पहना और एक नरम सा हैट पहना। वह अचानक टेबल से टकराता है और टकराने की आवाज़ सुनकर जेरेड शीघ्रता से घूमता है और रिवॉल्वर के साथ एक आदमी को देखता है। वह अपना अच्छा व्यवहार दिखाता है, शांत और भावहीन दिखाने का प्रयास करता है। घुसपैठिया उसे स्मार्ट न बनने की चेतावनी देता है और घुटनों के बल चलवाने की चेतावनी भी उसे देता है। तभी घुसपैठिया ने पूछा उससे कि क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? तो जेरेड ने कहा, आप मुझे सूचना दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं? क्योंकि ये प्रश्न की रचना में नहीं है। फिर घुसपैठिया ने पूछा, अच्छा तुम्हारे ईसाई नाम क्या है? उसने दिया कि ये विंसेंट चार्ल्स है। फिर घुसपैठिया ने पूछा, तुम कार रखते हो? तो उसने नकारात्मक जवाब दिया। घुसपैठिया ने बोला कि वह झूठ बोल रहा है, वह जानता है कि उसके पास कार थी। फिर भी जेरेड ने पूछते उसका ध्यान बांटने की कोशिश की कि वास्तव में वह एक अमेरिकी था और वह केवल चतुराईपूर्ण नकल कर रहा था। जब घुसपैठिया ने उसके अपनी रिवॉल्वर की याद दिलाई तो जेरेड ने स्वीकार किया कि कार गैराज में थी। घुसपैठिया ने आगे पूछा, क्या लोग अक्सर तुमसे मिलने आते हैं? तो जेरेड ने जवाब दिया, आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोग मिलने के लिए कष्ट पाकर भी आते हैं, जैसे कि बेकार सब्जी वाला, दूध वाला, किंतु कोई भी इतना रुचिकर नहीं था जितना कि वो घुसपैठिया था। फिर घुसपैठिया ने बताया कि वह जानता था कि जेरेड व्यापारियों से नहीं मिलता था। जेरेड ने कहा कि ऐसा लगता है उसके बारे में जानकारी जुटाने में काफ़ी कष्ट सहा था उसने, क्योंकि वह जेरेड के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। फिर जेरेड ने घुसपैठिया के बारे में अपने को बताने को कहा। जब जेरेड ने घुसपैठिया के बारे में कुछ बताने को कहा तो घुसपैठिया ने कहा कि उसके पास दिमाग है और वह उसका प्रयोग करता है, इसलिए वह वहाँ पहुँच गया था और जहाँ वह पहुँचना चाहता था। जेरेड ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा कि छोटी सी इस कुटिया में घुसपैठ करने के लिए अत्यधिक दिमाग की आवश्यकता ही नहीं होती है। और जेरेड ने फिर आगे पूछा, क्या किसी अपराध में उसकी विशेषता थी? तो घुसपैठिया ने जवाब दिया, यह आभूषण डाके का क्षेत्र था। जेरेड ने कहा कि आभूषण तो यहाँ बहुत कम और दूर दराज थे। तो घुसपैठिया ने कहा कि पुलिस भी यहाँ की ऐसी ही स्थिति में है, वह वहाँ कुछ दिन विश्राम करेगा। जेरेड ने कहा कि वहाँ उसे रहने के लिए निमंत्रित ही नहीं किया गया। तो घुसपैठिया ने व्यंग्यतापूर्ण तरीके से कहा कि जेरेड वहाँ लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा, वह उसे मार डालेगा। जेरेड ने कहा कि ये बात तो बहुत अन्यायपूर्ण है, उसने अपराधों में हत्या को क्यों बढ़ाना चाहिए? तो घुसपैठिया ने सूचित किया कि हत्या के एक केस में उसकी पहले से ही तलाश चल रही है, अतः एक और हत्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जेरेड ने कहा कि उसे मारकर उसे क्या मिल जाएगा? तो घुसपैठिया ने जवाब दिया कि उसे एक स्वतंत्रता मिल जाएगी। घुसपैठिया ने कहा कि वह वीसी जेरेड के रूप में जिएगा। जेरेड ने कहा कि उसके जैसा वेश ही नहीं बना रखा है। तो घुसपैठिया ने कहा कि वह उसका चश्मा और वस्त्र पहन लेगा। उसने बताया कि उसने एक सिपाही को मार डाला था, इसलिए पुलिस उसके पीछे थी। अब एल्सबरी में था, उसने जेरेड को देखा कि शारीरिक रूप से उसके जैसा ही था। तब एक रहस्यपूर्ण आदमी के जैसा लगा था, फ़ोन पर आदेश देना, अचानक चले जाना और तत्काल ही लौट आना। अब घुसपैठिया उसे गोली मारने की तैयारी करता है। जेरेड ने कहानी घड़ी कि पुलिस उसके पीछे थी, उन दोनों के लिए अच्छा होगा कि वे कार से यहाँ से भाग जाएं। अब उसका बैग तैयार था, इसलिए वेश बदलने की चीज़ें थी। उसका फ़ोन आया, उसने घुसपैठिया को पुलिस में आने की सूचना दी।
घुसपैठिया इसको सुनिश्चित करने का पूरे प्रयास करता है। अब घुसपैठिया जांचने को जब आगे की ओर झुकता है तो जेरेड उसे अलमारी के अंदर धकेल देता है, रिवॉल्वर को उसके हाथ से छुड़ा देता है और धड़ाम से दरवाजे को बंद कर देता है तथा उसे बंद करता है। और फिर एक आदमी को फ़ोन करता है कि सार्जेंट मित्र जो सार्वजनिक मधुशाला में होगा उस घुसपैठिए को गिरफ्तार करने भेज दें। और वहाँ से अचानक से उस नाटक का पर्दा गिर जाता है। सो दिस वॉज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड समरी पार्ट ऑफ दिस ड्रामा. If you have any doubt or confusion, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.